आईजीसीएसई में अपीयर होने वाले होंगे, कुछ ओ लेवल में अपीयर होंगे। और जो अभी हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं विच इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री नॉर्मली आप लोग स्कूल्स में, अगर आपके पास स्कूल में ग्रेड 11 ईयर्स में ओ लेवल हो रहा है, मीन O1 O2 O3, तो ऑन कुछ पोर्शन इस ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग 8th क्लास में करते हैं, कुछ पोर्शन आप 9th क्लास में करते हैं और कुछ पोर्शन आप 10th क्लास में करते हैं। मीन ये काफी लेंथी टॉपिक है एक ट्रिग्नोमेट्री। अगर इसकी बात की जाए तो ट्रिग्नोमेट्री में आप में से कुछ लोग अपने स्कूल्स में डी सीरीज फॉलो करते होंगे, D1 D2 D3 D4 वगैरह। कुछ लोग वो आईजीसीएसई की एक डिफरेंट बुक होती है उसको फॉलो करते होंगे। बट आप कुछ भी फॉलो करें, यहाँ पे हमने अल्टीमेटली देखा जाए तो हमने सिलेबस कंप्लीट करना होता है जो कि कैम्ब्रिज ने डिस्क्राइब किया है। अब वो कैम्ब्रिज का सिलेबस वो किसी भी बुक को आप फॉलो करके करें, एट द एंड जो टॉपिक्स उसने मेंशन किए हैं वो हमने करने हैं, राइट। हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसकी अगर ओ लेवल में बात करें तो ओ लेवल में ऑन एवरेज यू विल फाइंड अ क्वेश्चन इन P1 एंड P2 ऑफ 12 to 15 मार्क्स। मीन 12 मार्क्स, 13 मार्क्स, 14 मार्क्स और 15 मार्क्स तक आ सकता है। और जो लोग आईजीसीएसई करेंगे उनका उनके पेपर 2 और पेपर 4 में जो एक्सटेंडेड पेपर है, मीन ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक उनका अराउंड 15 to 18, समटाइम्स 20 मार्क्स भी सिर्फ इस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में से आ सकते हैं। इस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को हम फर्दर डिवाइड करेंगे। नॉर्मली जिस तरह आप लोग अगर बात की जाए तो आप लोग ओ लेवल मीन पहले सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को 8th क्लास में स्टार्ट करते हैं। 8th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में का क्या पार्ट पोर्शन आप कवर करते हो? पाइथागोरस थ्योरम। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है। जो आप सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री में आप 8th क्लास पे पहले स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद नॉर्मली ग्रेड 9 में जब आप आते हो तो वहां पे शायद वहां पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करते हैं, साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टेन रेशियो। और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद आप लोग फर्दर ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, नॉर्मली वो ग्रेड 10 में की जाती है, विच इज साइन रूल, कोसाइन रूल, उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसी में फर्दर बेरिंग भी आ जाती है और उसी में फर्दर 3D प्रॉब्लम भी आते हैं जिसमें राइट एंगल, जिसमें 3D प्रॉब्लम है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। तो काफी लेंथी टॉपिक है। हम ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक D2 में भी है, कुछ पोर्शन कुछ 3 में है, मोस्टली D3 में है। लेकिन जहां जहां पे भी हम इसको एक ही गो में करेंगे। और स्टार्ट लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट मीन टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीजें तो बहुत सिंपल, आपने ऑलरेडी ऑलरेडी तो खैर काफी चीजें ही आपने की हुई हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को अगर कंसिडर करें तो वो आप लोग नॉर्मली 8th क्लास में करते हैं। बहरहाल हम आप सभी करेंगे। ओके, ओके, फर्स्ट सब टॉपिक इन ट्रिग्नोमेट्री इज पाइथागोरस थ्योरम। जी, आई होप कि यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस थ्योरम। व्हाट इज दैट? Pythagoras theorem is, yes, first of all, it is applied on right angle triangle. And Ahmed, what is right angle triangle? जी, एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, इफ वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री देन दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। और उधर है, इधर आ जाए और इधर आ जाए। राइट एंगल ट्राइंगल, सो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में
एक एंगल जो 90 डिग्री उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. आउट ऑफ दीज दिस राइट एंगल ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स. So the longest side you can see, which one is the longest side? The side which is opposite to 90 degree. This is the longest side of this triangle. और इस longest side को हम कहते हैं hypotenuse. So we will represent it with simply H, mean hypotenuse. The longest side which is opposite to 90 degree, this is the hypotenuse. And the other two sides, one of them is perpendicular and other is base. जब तक हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू नो कि which one is perpendicular and which one is base. So usually we will call this vertical line as perpendicular and this as base. Hypotenuse is the longest side. The other two sides, one of them is perpendicular and other is base. So what is Pythagoras theorem? So Pythagoras theorem is h square is equal to p square plus b square. Square of hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse square is equal to, आज इस तरह इंस्टॉल कर ले, थोड़ी सी चेयर इधर करना, आप आ गया. Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So if Pythagoras theorem में these all three are the sides, और sides की length सेंटीमीटर में हो सकती है, it can be in meters, it can be in kilometers, miles. इसमें कहीं पे एंगल यूज नहीं होता. राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एंगल यूज होगा, बट पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए कहीं पे एंगल यूज नहीं होता. दीज ऑल आर थ्री साइड्स. कब यूज होगा ये पाइथागोरस थ्योरम, क्यों यूज होगा, क्या करेंगे इससे आप जी बताइए, पता है हमें. जोया, क्यों यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगता है आप जी. यस, आपके पास थ्री जो साइड्स होंगी ट्रायंगल की, अगर इनमें से कोई सी टू साइड्स गिवन हो तो यू कैन फाइंड थर्ड साइड बाय यूजिंग दिस पाइथागोरस थ्योरम. सो लेट्स सी, अगर कोई एग्जांपल हम देखें. इफ वी हैव अ ट्रायंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड अगेन पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होगा. इफ आई टेल यू कि दिस साइड इज say 4 centimeter and this is 3 centimeter, and find the third side, say this is x. अहमद, फोन पॉकेट में होना चाहिए, अब आपका दोबारा फोन ना निकले. So out of these three sides, to apply Pythagoras theorem, two of the sides should be given. Okay, in three sides में से 3, 4 and x, कौन सी साइड मरियम हाइपोटेन्यूस है? x, the longest side is opposite to 90 degree, this is hypotenuse. अगर आप पहले हाई फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. This is Pythagoras theorem. So what is hypotenuse here? It's x. So x square. What is perpendicular? It is 4. So 4 square. What is base? Base is 3. So 4 square is 16. 3 square is 9. So we got x square is equal to 25. अगर x square 25 है तो आप x कैसे फाइंड करते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं. सो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. अगर लेफ्ट साइड पे स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली x, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज, इट इज 5. सो x इज 5. नेक्स्ट क्वेश्चन. इज दिस राइट एंगल ट्रायंगल? यस, 90 डिग्री बना है. 90 डिग्री का सिंबल आप देख सकते हैं. सो इट मीन दिस इज O levels. इधर से वेट शेयर.
Thank you, sir. Okay, this is another right angle triangle. Now in this triangle, this length is given 10 centimeter, this is 8 centimeter, and we want to find x now. अब यहाँ पे जो x find करना है, आपके पास 3 sides हैं. Out of those 3 sides, 2 of them is given. You have to find third side. So अगर ये right angle triangle है, तो we can apply Pythagoras theorem, which is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. जी ज़रा इसमें hypotenuse क्या है? It is 10, which is hypotenuse is the side which is opposite to 90 degree. So which is 10, so 10 square. Perpendicular और base कौन सी है यहाँ पे? Perpendicular कौन सा है? X. वैसे पाइथागोरस थ्योरम में अगर आपने परपेंडिकुलर बेस को आपस में मिक्स भी कर दिया कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि देखें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जाए या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अभी के लिए अगर आपने परपेंडिकुलर को बेस और बेस को परपेंडिकुलर लिख दिया तो नो इश्यू, लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करेंगे तो उस वक्त इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि विच वन इज परपेंडिकुलर एंड विच वन इज बेस. So right now perpendicular is x, so it is x square, and what is base? Base is 8, so 8 square. We know 10 square is 100, 8 square is 64. अगर हमने x फाइंड करना है तो 64 को हम शिफ्ट कर देंगे इधर, तो वो क्या हो जाएगा? -100 minus 64 is equal to x square. What is 100 minus 64? It is 36. So अगर x square 36 हो तो हम x फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 36 स्क्वायर रूट इज 6. जी काफी बेसिक चीजें हैं अगर देखा जाए तो. पाइथागोरस थ्योरम अगर, मुझे उम्मीद है सब ने कहीं ना कहीं 8th क्लास में किया होगा, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है. लेकिन इवन देन अगर कहीं पे प्रॉब्लम आए तो मुझे काफी स्टूडेंट्स जो हैं जिनके बारे में आइडिया नहीं है कि उनका मैथ्स का लेवल कहाँ तक है, तो मैं काफी बेसिक से ही कर रहा हूँ आज. लेकिन मुझे आप लोगों ने बताना है अगर आपको कहीं लगा कि कोई चीज समझ नहीं आई. जी थोड़ा सा आगे और चलते हैं. This is another triangle. This length is 5.7. This is 8.1. All the units are centimeter. Find x. जी स्टार्ट करें सब. सॉरी, यूज करें कैलकुलेटर. आप चाहते हो मोबाइल मिल गया, मोबाइल वाला कैलकुलेटर नहीं काम है, दूसरा कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए. कल से लेके आना है प्लीज. ट्रिग्नोमेट्री आगे थ्रू आउट जो होगी आपका कैलकुलेटर के बगैर नहीं होगी, तो कल से कैलकुलेटर सबके पास होने चाहिए, और फोन वाला कैलकुलेटर कोई यूज नहीं करेगा. यार कैलकुलेटर इसी का यूज करो. मैं आपसे क्वेश्चन याद है कैसे कि स्लाइड में स्टार्ट में मैंने आज फोन वाला यूज कर सकते हैं. जहाँ पे कैलकुलेटर आएगा वहाँ पे अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो कैलकुलेटर वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, लेकिन जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है वो स्टार्ट नहीं कर सकते. Okay, so we know the rule that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Which one is the hypotenuse here in this question? 8.1 is the hypotenuse. So we will write 8.1 square
आप x को परपेंडिकुलर कहें या बेस कहें, सपोज आई एम सेइंग परपेंडिकुलर, सो x स्क्वायर एंड बेस इज 5.7 स्क्वायर। तो कैलकुलेटर यूज करेंगे, 8.1 स्क्वायर आएगा, 5.7 स्क्वायर आएगा, और वैसे अलग अलग भी लिख सकते हैं और सब कुछ एक ही दफा कैलकुलेटर में भी यूज कर सकते हैं। जी बताइए, व्हाट इज 8.1 स्क्वायर? 65.61 and 5.7 square is 0.49. So we got x square is equal to 65.61 minus 32.49. 33 point exact 112. This is x square. और अगर x square आपके पास आ जाए तो फिर x कैसे फाइंड करते हैं? We will take square root on both sides. So if you take square root, you will get 5.75 के बाद क्या नंबर आता है? तो 7.5। अगर नेक्स्ट नंबर वो 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इंक्रीज हो जाएगा, तो इन दिस केस इट विल बी 5.75। जी यही आंसर है सबका। ओके नेक्स्ट, कोई मसला पाइथागोरस थ्योरम में अभी तक? ओके ओके नेक्स्ट इज फाइंड एक्स। दिस, ये जो बेस है ये 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहां तक ये 4 सेंटीमीटर है एंड दिस इज 2 सेंटीमीटर। डायग्राम स्केल पे नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी पे रिलाई करेंगे, एक्यूरेट डायग्राम स्केल पे ड्रॉ नहीं हुई। So this base is 4 centimeter, this base is 2 centimeter. You need to find that x. Okay. Okay, who will tell me the method कि x find करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जी wait. आलियान लेफ्ट ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। ओके yes, so first we need to apply Pythagoras theorem in the triangle which is on the left। उधर से हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगी, वो परपेंडिकुलर दोनों साइड्स के लिए, दोनों ट्रायंगल के लिए बेसिकली कॉमन है।
तो पहले अगर हम इस ट्राइंगल पे अप्लाई करें तो आपके पास हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे 5। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, आप उसको जो फाइंड करनी है उसको आप y कह लें। से दिस साइड इज y, उसको आप x मत, क्योंकि x ऑलरेडी वो है। से दिस इज y, so it will be y square plus 4 square. 5 square is 25, 4 square is 16. So 25 minus 16, you will get y square 9. So y is 3 सेंटीमीटर। मीन ये लेंथ आपके पास y 3 सेंटीमीटर आ चुकी है। और अगर ये लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो we can find now the other x by using Pythagoras theorem again. अब Pythagoras theorem अप्लाई करेंगे तो hypotenuse is x, x square is equal to 2 square plus 3 square. So 2 square 4, 3 square 9, 9 plus 4 is 13. So if x square is 13, now take the square root on both sides. वो लोग जो ओ लेवल में होंगे, अगर उनके पेपर 1 में ये क्वेश्चन आता है तो वो क्या लिखेंगे, x is equal to exact square root 13 is the answer. That's it. मीन जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा और पेपर 1 है, अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो आपका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 13 ही आंसर होगा। अगर ये आईजीसीएससी में आता है या जीसी में पेपर 1 पेपर 2 में आ जाता है कैलकुलेटर जिसमें अलाउ है, तो फिर आप कैलकुलेटर यूज करके आंसर लिख सकते हैं और आंसर इज 3। आंसर अगर क्वेश्चन में डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मेंशन नहीं है तो हमारे आंसर्स एज पर द कैम्ब्रिज रूल शुड बी करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर क्वेश्चन में मेंशन है 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप वो यूज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है और आपका आंसर नॉन एग्जैक्ट है तो फिर आप अपना आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे। इसका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बताएं क्या है। 60 जी। नोमा हिशाम। हाँ जी। मीन सिंपल सी बात है, जीसीए या ओ लेवल कैलकुलेटर अलाउड है तो 3.60, नहीं अलाउड तो अंडर 30। जी क्लियर है। Okay, this is given 6 centimeter. This is given 8 centimeter. आप देखें तो इसमें एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल अटैच है। आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि दिस इज 3 सेंटीमीटर। ओवरऑल ये एक शेप है, आपको इस शेप का एरिया कैलकुलेट करना है। इस शेप का अगर मैं नाम लिख दूं तो से ए बी सी डी टी, आपको इस फुल शेप ए बी सी डी का एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। उससे पहले मुझे जरा बताइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है क्या आपको। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, आपस में एंगल 90 डिग्री बनाते हैं, वो बेस और हाइट होते हैं। और रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेप, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों को हमने ऐड करना है। सो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल भी चाहिए और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी चाहिए। जी मेथड कौन बताएगा पहले, मीन प्रोसीजर इसमें क्या फॉलो करेंगे। जी हिशाम बताइए। ओके
यस, हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके लेंथ बीई हाइपोटेनस क्यों फाइंड करना है? वेयर डू वी नीड हाइपोटेनस? जी, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू विड्थ होता है, उसकी विड्थ इज गिवन 3 सेंटीमीटर, बट इट्स लेंथ, दिस लेंथ इज नॉट गिवन, तो वो लेंथ हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो दैट्स व्हाई वी नीड पाइथागोरस थ्योरम हियर। सो अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम पहले, ताकि आपके पास लेंथ बीई आ जाए। फाइनल एरिया इज 54। जी, सबके पास 54 आ रहा है, ऐसे ही है? जी बताइए किससे नहीं हो रहा। ओके, देख लें, सिर्फ मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि हमने सबसे पहले वी अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square is equal to 8 square plus 6 square, so we got hypotenuse 10, mean this length is 10 centimeter. So पहले आप हमने एरिया अगर फुल शेप का करना है तो एरिया इज इक्वल टू, दिस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ rectangle. What's the area of triangle? The formula for the area of triangle is half into base into height. And what's the area of rectangle? It's length into breadth, length into width. So area half into base into height. What is base and what is height? Triangle की base और height कौन सी है? 6 and 8, 8 and 6 या 6 and 8, it's the same thing, 6 and 8. And length into width of rectangle. So it is length is 10 and width is 3. So 10 into 3. So ये सारी कैलकुलेशन आप विदाउट कैलकुलेटर इसमें कर सकते हैं। So 8 times 6 is 48. 48 divided by 2 is 24. 10 times 3 is 30. So 24 plus 30 is 54. Okay. Next 54 यूनिट क्या होगी इसकी? सेंटीमीटर स्क्वायर। Check whether 5, 12 and 13 are the sides of a right angle triangle. आपने सिर्फ ये चेक करके बताना है कि ये जो 3 साइड्स गिवन है 5, 12 एंड 13, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं या राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स नहीं है। शो वर्किंग एज वेल। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये क्या हर ट्रायंगल पे अप्लाई हो सकता है? नो। किस ट्रायंगल पे सिर्फ अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। सो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पे अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है तो ये जो साइड्स हैं ये पाइथागोरस थ्योरम में पुट करें 5, 12, 13 और देखिए क्या ये पाइथागोरस थ्योरम में पुट करने से उसको सेटिस्फाई करती हैं। सेटिस्फाई मीन क्या राइट और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल आ रही हैं? अगर तो इक्वल आ रही है मीन अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हैं, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। और अगर ये उसको सेटिस्फाई नहीं करती तो इट मींस दे आर नॉट राइट, द
द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। जी किसने किया? सेटिस्फाई हो रही है? यस और नो? अच्छा चलिए चेक करते हैं। बिल्कुल देखिए इधर, सपोज कर लेते हैं कि ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो आउट ऑफ 5, 12 एंड 13 व्हिच वन विल बी द हाइपोटेन्यूज? 13 will be the high longest side is the hypotenuse. So अगर चेक करते हैं hypotenuse का स्क्वायर if it is equal to the sum of the squares of perpendicular and base, तो अगर ये इक्वल है, अगर ये इस पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं तो इट मींस राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करती तो इट मींस दीज आर नॉट द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। चलें, हाइपोटेन्यूज में क्या पुट करें? 13, परपेंडिकुलर को 12 या 5, परपेंडिकुलर को 12, 5 को बेस, या परपेंडिकुलर 5, 12 बेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। व्हाट इज 13 स्क्वायर? 169। 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144। इफ यू ऐड दीज टू तो वी आर गेटिंग 169। सो 169 इज इक्वल टू 169। इट मींस ये दोनों, ये 5, 12, 13, ये these are the sides of a right angle triangle. Done? So the answer is yes, they are the sides of the right angle triangle. Okay, अब चेक कीजिए, नाइन, 10 and 13. And show the working as well. Working. No. So for Pythagoras theorem, hypotenuse square should be equal to perpendicular square plus base square. So यहाँ पे इसका मतलब hypotenuse आपने कौन सी साइड ली होगी? 13, दूसरी दोनों 10 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज 169, 10 स्क्वायर इज 181। सो 169 is equal to 181. So they are, so 169 181 के इक्वल तो नहीं है। So we will write simply 169 is not equal to 181. So ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई, so ये तो बिल्कुल फिर इसका इक्वल नहीं हुए। So they are not satisfying the Pythagoras theorem. So the answer is no. अगर राइट एंगल ट्राइंगल ना हो तो फिर ट्राइंगल कौन सी होती है? आइसोसेलेस तो आप विद रिस्पेक्ट टू साइड्स आप बताते हो ना। अगर राइट एंगल ना हो किसी ट्राइंगल में तो और फिर दूसरी ट्राइंगल के और नाम क्या होते हैं? देखिए, इक्वल साइड्स के हिसाब से आप बता रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू साइड्स ट्राइंगल के 3 नेम्स हैं। विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल 3 साइड्स इक्वल; आइसोसेलेस ट्राइंगल, 2 साइड्स इक्वल; एंड स्केलीन ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स अगर बात की जाए तो एक ट्राइंगल होती है राइट एंगल ट्राइंगल, बाकी दोनों क्या होती है? राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। फिर एक होती है एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें ऑल द एंगल्स आर एक्यूट। व्हाट आर एक्यूट एंगल्स? लेस देन 90। वो एंगल्स जो लेस देन 90 होते हैं उनको एक्यूट एंगल्स कहते हैं। तो अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 90 से लेस हो तो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। व्हाट इज ऑब्ट्यूज? जिसमें कोई एक एंगल 90 से ग्रेटर हो जाए वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन जाती है। अब ये तो कंफर्म है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो फिर ये कौन सी है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? जी अभी तो हमें पता ही नहीं है। वैसे ये एक्यूट है, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे कि हाउ विल वी चेक वेदर इट्स एक्यूट और ऑब्ट्यूज। सो ये था पाइथागोरस थ्योरम। हम कल इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।